Am I audible to you? वेलकम बैक टू पारसारथी लॉ। एनएलएसआईयू से एक बहुत ही निंदनीय खबर सामने निकल के आई है कि वहां के छात्रों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है फॉर देयर बेसिक नीड्स। बेंगलुरु एनएलएसआईयू स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट लैक ऑफ एमिनिटीज इन हॉस्टल। एनएलएसआईयू बेंगलुरु स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट alleging water crisis and overcrowding in hostels. Water shortage, hostel overcrowding triggered student protest at NLSIU campus in Bangalore. The students first staged a protest on Tuesday night around 10 p.m. at the university's basketball court. They protested again on Wednesday afternoon from 1 p.m. at the professor's mess and later at 3 p.m. at the amphitheater, alleging that repeated concerns raised with the administration have largely gone unaddressed. क्या करे, बच्चे पढ़ाई करें कि प्रोटेस्ट करें, क्लास करें कि प्रोटेस्ट करें? क्या हो रहा है सर ये सब? एनएलएसआईयू का कैंपस है, जैसे लग रहा है पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस बना दिया है। A common concern raised by a student was the irregular water supply in hostel. They said taps, flushes, and jet sprays usually stop working abruptly, while water coolers do not dispense drinking water at times. क्या सब लगवा दिए हैं? वाटर कूलर वाटर ही नहीं सप्लाई कर रहा है। There have also been instances of unclear water supply. The problem becomes especially difficult during summer, more so in crowded hostel rooms. Safety concerns over ongoing construction on campus were also highlighted during the protest. Students said that academic activities are being carried out in the construction despite inadequate safeguards. They mentioned a recent incident in which heavy cement slabs fell in commonly used areas. Though no one was injured, in another incident, they alleged free fall of a lift in one of the main hostels from the second floor to the basement. 2 students were in the lift at the time of the incident. Last 7 to 8 years consecutively, नंबर 1 रैंक है इसका। और उसका क्या हाल है? A student also alleged overcrowding, particularly in women's hostels. A final year student said that while men's hostels have 18 bunk beds, women's hostels have 93 bunk beds. In some hostels blocks, they say 33 women are sharing 3 toilets. When these issues were taken up with the administration, the students claimed that the authorities responded that solutions cannot be provided overnight. The academic pressure is already intense. The least students expect is basic facilities, a student said, adding that the use is not just about inconvenience but about dignity and basic living conditions, particularly when there is no reliable access to water. The students questioned the state of hostel infrastructure despite the fees charged by the university. They said annual fees range between 4.5 lakh to 5 lakh, with more than 1.2 lakh going towards hostel accommodation. After months of complaints over water shortage, power cuts, and overcrowded hostel facilities, students of National Law School of India University (NLSIU) staged multiple protests on campus. क्या हो रहा है सर? देश की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का हाल आप पटना यूनिवर्सिटी जैसा बना दिए हैं। छात्र पढ़ने जाएंगे कि प्रोटेस्ट करेंगे? कहां है आपका डीन, कहां है आपका प्रॉक्टर, कहां है आपका वार्डन, कहां है आपका हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट? क्या कर रहा है?
कंजिक्यूटिवली सेम टाइम में, हाउ students will attend nature's call when everyone has to attend their academic classes in the same timetable. यूनिवर्सिटी का हाल पटना यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी जैसा बना दिए हैं। सबमर्सिबल इंस्टॉल करवाइए, वाटर सप्लाई कर की व्यवस्था करवाइए, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करवाइए, टॉयलेट्स क्लीन करवाइए। देश की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का ये हाल है, क्या ही हो रहा है देश में। वो सब फ्यूचर्स लॉयर हैं, एडवोकेट्स, जज, देश के फ्यूचर है वो सब। उन लोगों का ये हाल है, उन लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, इतना टाइम टेबल होता है, इतना सारा क्लास होता है, वो क्लास करेंगे कि प्रोटेस्ट करेंगे? और यही करने के लिए वो उतने बड़े क्रैक क्रैक किए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। इससे अच्छा पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता वहां, सब राम भरोसे चलता है वहां। You are requested to resolve these problems as soon as possible. I'm just praying to you. Thank you. Jai Hind.